Hi, my name is Sachin. I started part time traveling with my wife in 2017. I started capturing my travel memories from 2018. And here is our best and worst travel memories so far. You want to say anything? मैं तो बस ग्लैमर बढ़ाने आई थी. Thank you so much for tuning in and welcome to our best and worst travel memories. आप start करोगी? Okay. Best या worst? Let's start with worst. And we'll end on the best. Yeah. Okay, fair enough. So आपका worst travel experience कौन सा था? Cool 2017. उससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता. First of all, I don't like bike rides. I just don't want to sit on a bike and you forced to go on a bike ride. That was the worst. I didn't force. It was like Okay, fine, you didn't force, but I never wanted to go on a bike ride. सोचा चलो 4-5-6 घंटे बैक्स निकल जाएंगे, बट फ्रॉम 6 hours to it became 9 hours journey. Then वहाँ पहुँच के we lost the path, we lost the hotel, there is no room and accommodation नहीं मिल रहा है. Yes. And it was a long weekend. पूरा Yeah, कूर्ग, yeah. I think पूरा बैंगलोर भरा हुआ था. I think कूर्ग में ही. Okay, so Coorg was your worst. Another one? कोई और? Worst is Coorg के अलावा कुछ भी नहीं था? नहीं, कूर्ग के अलावा और कोई worst नहीं था. This was worst. Okay. What was yours? For me, the worst was I'll say Coorg. Yes, definitely Coorg was the worst one. Because उसके अंदर एक्चुअली हुआ क्या था, मैंने yatra.com से प्री बुक किया था एक होम स्टे जहाँ पर हम लोग रहने वाले थे. इट वॉज ब्यूटीफुल इन द फोटोज़, क्योंकि जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो मैंने होम स्टे वाले मैनेजर को कॉल किया एंड दिस गाय इज सेइंग दैट यू डोंट हैव एनी बुकिंग एंड इट टुक मी बाय शॉक लाइक हाउ इज इट इवन पॉसिबल. आई हैव अ कंफर्मेशन ईमेल, आई हैव अ कंफर्मेशन मैसेज, आई हैव एवरीथिंग कंफर्म. हम लोग वहाँ पे सैटरडे को पहुँचे थे इवनिंग के अंदर और आई अंडरस्टैंड कम्प्लीटली, आई कम्प्लीटली रिलेट टू हर. हम लोगों ने गलत टर्न लिया, उसकी वजह से रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा हो गया. अ 6 hour बाइक राइड टर्न इनटू अ 9 hour बाइक राइड. बट ऑनेस्टली I did enjoy it. honestly all was fine. I was okay until unless that guy said that we don't have any booking. उस समय बज रहे थे शाम के 5:30. It was already dark. It was starting to get dark. शाम के 5:30 बज रहे हैं. It was drizzling on us and we do not have anywhere to stay and we are close to 300 kilometers away from our house. We can't ride back and there is no place to stay. Everybody said it is a weekend time and you will not get any place to stay. And somehow we managed to came back to the city center. उसके बाद में हम लोगों ने लगभग सभी होटल में पूछा जो भी रास्ते में पड़े, do you have a place to stay, do you have a place to stay, do you have a place to stay. Yatra didn't support at any point of time. There was zero support from them. तो booking.com था या नहीं? I don't think so. So we asked every single one of them, all the hotels, and finally we got one hotel. But it was a good place, honestly. I'll say Coorg is a good place to visit, but only this particular experience made it one of the worst moments of my travel history. So that was first one for me. Second one, I think I'll say टाडा, जब हम लोग चंद्रयान देखने के लिए गए थे. हाँ, वो भी ऐसा ही था कुछ ना. उसमें भी accommodation नहीं मिल रहा है. Exactly. भटक रहे हैं. हमेशा भटकते हैं, चलते हैं. So the third, I'll not say it as worst experience, but it was a bad experience, honestly. So this experience happened in the last Goa trip, Goa 2019 New Year trip. बैंगलोर से गोवा किसी भी डायरेक्ट ट्रेन में जगह नहीं थी. तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आधी जर्नी किसी और ट्रेन के अंदर करें और आधी जर्नी किसी और ट्रेन के अंदर करते हैं. तो और दोनों ही ट्रेन को बैंगलोर से ही जाना था. तो जिस ट्रेन के अंदर हम लोगों को बुकिंग थी आधी जर्नी के लिए, वो ट्रेन 1.5 घंटा लेट हो गई. वो ट्रेन जाती थी हुबली तक और हमें हुबली से गोवा की ट्रेन के अंदर बैठना था. हमारी ट्रेन 1.5 घंटा लेट स्टार्टिंग से ही, और जो ट्रेन हमें हुबली में कैच करनी थी वो हम कैच अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए. हम लोग रात के 1:40 पे हुबली रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं. द टाइम राइट नाउ इज़ 1:40 इन द नाइट और हम लोगों ने ट्रेन मिस कर दी. यस, There is no way we can reach Goa at that point of time. Oh my God. I started calling to all bus operators from Hubli और उन लोगों ने बोला सारी बसेस मॉर्निंग की है. वो भी न्यू ईयर का टाइम. हमेशा हम गलत टाइम पे हमारे साथ कुछ ना कुछ होता है.
सभी बस ऑपरेटर्स ने बोला बसेस मॉर्निंग में ही स्टार्ट होंगी. देन आई स्टार्टेड रैंडमली सर्चिंग फॉर जूम कार कि किसी तरीके से मैं यहाँ से कोई भी कार रेंट कर सकूँ, गोवा पहुँचूँ और उसके बाद मैं उस कार को वहीं पे छोड़ दूँ. दैट वाज द प्लान. बट जूम कार आउट स्टेशन अवेलेबल ही नहीं थी, कि ऐसा कोई चांस ही नहीं था कि मैं हुबली से जूम कार लूँ, गोवा छोड़ दूँ. इन गूगल एड्स आई गॉट टू नो दैट ओला आउट स्टेशन इज़ नाउ अवेलेबल फ्रॉम हुबली. I immediately downloaded Ola app. I booked a car from Hubli to Goa, and by God's grace, I got one taxi from Hubli to Goa at 2 a.m. in the night. अभी हम लोगों ने ओला बुक किया है एंड विल बी रीचिंग गोवा बाय 7 in the morning probably. I took a sigh of relief the moment we entered Goa, and by that time everything started to be at ease. We entered Goa somewhere around 5:30 in pitch black night, honestly. And then he dropped us, and then I took a deep breath. Finally, I am at my destination. Let's come to the best part now of our 2.5 years of travel history. So, what was your best experience of traveling? Goa 2018, our Okay. first anniversary. Trip. That was so good. हमेशा से we wanted to go Goa. Yes. Our first glimpse of Goa was like, oh my Amazing. god. It The was- countryside roads, you know, the people, the beaches, The vibe. atmosphere. Yes, the vibe. Oh my god, I loved it. It was the best experience of traveling because we stayed in a luxury hotel. Yes. That made it really nice experience. Yes. The buffet every single morning वहाँ Yes. जाके Free breakfast, free breakfast. king size buffet. That was like we tried 3 types of omelette, Yeah, dosa, yes. coffee, Imagine. sausages. How can you forget your Yes, sausages? imagine, yes. हमेशा and you used to say और लेके आओ sausages. बैठ के बच्चे कहते हम लोग लिटरली हमें दोपहर में भूख नहीं लगती थी, हम लोग इतना स्टफ कर लेते थे खुद को ब्रेकफास्ट से. इट वाज किंग साइज ब्रेकफास्ट. 3 types of omelets, 2-3 types of dosas, you name it and it was there. It was a really luxury hotel. It was really luxury. I think it was 4-star. Ibis is 4-star. I think so. Yeah, it was a 4-star hotel. Beautiful place. Yeah, beautiful place. And everything was beautiful. At least I felt for the first time being in Goa. इतनी गर्मी थी. I mean, चिलचिलाती धूप में पैर जल रहे हैं. And like we are burning as hell, but still we did not stop. Any other second one? Ooty. Yes. That was first time seeing a proper hill station. Coorg, Chikmagalur, all were like good, but I didn't have so much of expectation out of Ooty. I Yes. was like mesmerized by that place. Yes. It was really beautiful. और Yes. mist थी हर जगह. It was cold, chilly. Yes. The It was- only unfortunate thing was we only stayed for 1 day. Yeah, one day we could have stayed more. We should go Yes. back again. Yes. I would I love am to planning. go back. Yes, I am planning to go back But again to Corona, Ooty. oh god. Damn this coronavirus, This honestly. year is screwed. This year is really. Ooty was honestly mesmerizing. It was good. What was your best experience? My best experiences, I'll definitely say Goa. Every single time, the last time we went on the New Year, and also जब हम लोग पहली बार गए थे on our anniversary, it was good. Another one is Jaipur road trip. Honestly, because Jaipur मेरी birthplace है and I'm very close to that place. And the moment I went there, you know, Hawa Mahal, Amer Palace. This is Amer. It was built by Meenas originally. And then Nahargarh, you can see the whole city. Everything I love about Jaipur, every single thing. Jaipur road trip is very close to me. That is it in this video. ये थी हमारी बेस्ट और वर्स्ट ट्रैवल मेमोरीज. अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है हमारी ट्रैवल मेमोरीज को लेके, या फिर कोई भी क्वेश्चन है ट्रैवलिंग को लेके, या फिर कोई भी क्वेश्चन है किसी भी चीज़ को लेके,
Just comment down below. प्लीज़ आस्क इन द कमेंट्स एंड अगर आप लोगों ने कोई भी हमारा ट्रैवल मिस किया है सो यू कैन चेक बैक. मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है, यू कैन वॉच द प्लेलिस्ट एज वेल. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. आई रियली अप्रिशिएट इट. यू वांट टू से एनीथिंग? मैं तो बस ग्लैमर बढ़ाने आई थी. So with that said, thank you so much for taking out your time and watching this video guys. I really appreciate it. Thank you so much for the support all this while that you have shown, that you have stayed around. I hope to make crazy videos and I have crazy ideas in my mind for the future as soon as this pandemic is over. So wait for that. Thank you so much once again. Please like it if you like the video. Please share if you want to. Please subscribe if you haven't already. And I'll see you in the next one. Till the time, do what you love.